goodbye to you, go home, you're tired. America, man, there's no age limit. You can keep working until 80, 90, whatever age you want to keep working, you can keep working. Nobody can get rid of you because of age. In a very convenient and common issue is that universities or offices will try to lay you off because you are older now. They want to get a younger person who comes with newer ideas, comes at a so lower salary. उन्होंने बड़े फैंसी नाम बनाए हुए हैं किसी को रिटायर करने का या फायर करने का. ये नहीं कहते कि आपको फायर किया जा रहा है या आपको रिटायर किया जा रहा है. Sometimes they'll say you are being subjected to reduction in force, RIF. We are cutting down our workforce, so you are subjected to reduction in force. But then the employee will say, why me? Why not you? So now it becomes a court case. That am I being laid off because of my age, or is there something else going on here? And are the businesses engaging in fraudulent activity? For example, there was a case I did for North Carolina where some health agencies were billing the state. They were overbilling the state. बिल होना चाहिए $100 का, $150 का बिल भेज दिया. अब स्टेट ने पे भी कर दिया. तो जनरली क्या होता है कि होम हेल्थ में क्या किसी की जैसे सर्जरी हुई, कुछ हुआ तो घर पे हैं, ए नर्स विल कम, थेरेपिस्ट विल कम होम टू प्रोवाइड सर्विसेज. अब वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए तो फिजिकल थेरेपी असिस्टेंट आया है, बट द बिल इज मेड इन द नेम ऑफ ए फिजिकल थेरेपिस्ट. उसका रेट हायर है, असिस्टेंट का रेट कम है. सो that's how cheating happens. That's one of the ways cheating happens. And so the question is, the state is being duped. Now you need to help the state to recover all the money that they cheated. And again, depending on time, I want to show you that case. जैसे एक होता है ना कि हम कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालते हैं. कोर्ट में बताया कि अच्छा जज ने कहा ठीक है मैंने मान लिया इसने चीटिंग की है, अब ये बताओ कि कितने पैसे इससे रिकवर करने हैं. तो आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल दिया. Confidence interval is let's say 100,000 to 200,000. तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि ये 100,000 इसको दें अब या 200 दें या एवरेज निकाल के दें, तो क्या दें. So there's something called the one-sided confidence interval, lower limit of the confidence interval. That's where the claim is going to be filed. तो आपने चलो वही बता दिया. अब एक केस में जज मुझे फाइनली कहता है कि Professor, okay, I trust your education and all of that, and you must have done it right. Why should I believe it? Just because of your reputation that you are a professor, you have a PhD. मुझे कोई concrete चीज़ दिखाएं जिससे मुझे यकीन हो जाए कि जो आपने कैलकुलेट किया है ये ठीक है. So what I was doing was, and I know that I'm going to run out of time, so let me talk about that story right now without using the slide. What I was doing was, for each of the 10,000 odd bills, whatever many bills were there, for each one of them you were calculating the amount of overbilling. Many of the bills there was no overbilling, but some of the bills there was overbilling. And we're trying to recover the overbilling part. And I told the judge that, Your Honor, overbilling can be a matter of dispute. लेकिन इसको कितना पैसा दिया गया है उसमें तो कोई dispute नहीं है ना. एजेंसी ने 20,000 बिल्स हैं उसके, उस 20,000 बिल्स के अगेंस्ट लेट्स से वी पेड $1 million, उसमें तो कोई डाउट नहीं है. एवरी बिल हैज ए पेड अमाउंट एंड एवरी बिल हैज ए ओवर बिलिंग अकाउंट. ओवर बिलिंग सिर्फ सैंपल के लिए निकाल सकते हो. अगर सभी 20,000 बिल्स के लिए ओवर बिलिंग निकाले तो फिर आपको सैम्पलिंग या स्टेटिस्टिक्स क्यों चाहिए. सो व्हाट यू डू इज यू टेक ए सैंपल ऑफ 100 बिल्स और उसको डाइसेक्ट करें एंड यू फाइंड आउट हाउ मच इज द ओवर बिलिंग. तो ऐसे योर ऑनर लेट्स प्ले अ गेम. You and I know that the total value of all the bills that were paid was, let's say, $1 million. But let me now pretend I don't know. And let's look at this sample, जो मेरा 100 का sample, उसमें भी तो है ना कि कितना bill amount क्या था. I said, let's pretend I don't know the total billing. I know only the paid amount for these 100. और उस 100 के basis पे let's calculate a confidence interval for the total. And is my $1 million, is it part of that confidence interval? If yes, then you should trust it. That the confidence interval that I have calculated based on a sample of size 100
is trapping the correct build amount. And once I explained that, the judge was comfortable. So sometimes these things happen. They will say, okay, Professor, are you telling me कि 20,000 bills थे और आपने सिर्फ 100 bills लेके आप चल रहे हो? Why should I trust कि आपकी calculation ठीक भी होंगी या नहीं? Be careful about certain things. Hypothesis testing, man, there's a major issue, two-sided test versus one-sided test. Actually, and listen to this very, very carefully. When I say this to my son, he said, Dad, go on. I listen to everything you say very carefully. And my audience also, sometimes they get upset when I say, listen to this carefully. As if like the other thing you were not listening carefully. I'm about to tell you something, again, very controversial. The controversial thing is two-sided test. हम लोग सब one-sided test भी करते हैं, two-sided भी करते हैं, two-sided confidence interval भी करते हैं, one-sided confidence interval probably करता ही नहीं है. ज़्यादातर one-sided confidence interval पढ़ाया ही नहीं जाता है, two-sided पढ़ाया जाता है. X bar minus or plus G alpha over 2 times sigma over square root n. There's a left limit, there's a right limit. The theory is, or the trend is, the advice is, ban all two-sided tests in all two-sided confidence intervals. You should not be teaching two-sided tests as a part of your curriculum. Now, that's a very provocative thought. और हम लोग कई बार गलती क्या करते हैं कि one-sided होना चाहिए, हम two-sided test लगाते हैं उस पर. Now think about something. जो रिसर्चर है, कौन सी चीज़ उसके फेवर में है, small p value और large p value? A researcher would love to see a small p value or a large p value. क्या लगता है? Small p value, because small p value means reject null hypothesis. ठीक है? अब two-sided test की p value और one-sided test की p value कौन सी बड़ी होती है? P value of a two-sided test generally is double the p value of a one-sided test. अगर लगना one-sided था, आपने लगा रखा है two-sided test, तो आपने तो अपनी p value को वैसे ही डबल कर दिया. तो जीता जीता केस आप वो हार गए. तो not only अगर रिक्वायरमेंट one-sided की है तो one-sided ही लगाना चाहिए. अगर two-sided की है तो you ask yourself very carefully कि यहाँ पे two-sided लगना था या one-sided लगना था. For example, age discrimination case. Generally ये कहा जाता है कि जो लोग फायर हुए थे उनकी एज जो रिटेन किए गए उनसे ज़्यादा है. तो दैट्स द करेक्ट एनालिसिस. अगर कोई कहे कि जो लोग फायर हुए मैंने उनका मीन निकाला, जो रिटेन हुए उनका मीन निकाला, आर दे सेम और आर दे डिफरेंट? यू आर लूजिंग योर बैटल राइट देयर. You should not be doing a test of mean of this group is different from the mean of this group. No. You should concentrate on mean of this group is higher than the mean of the other group. Make sure that you do make valid conclusions. बहुत सारे लोग कहते हैं कि कंप्यूटर ने p वैल्यू निकाली है तो यही that's what it is. कंप्यूटर कुछ नहीं निकालता, कंप्यूटर वही निकालता है जो आप कंप्यूटर को कहते हो निकालने के लिए. So don't blame it on the computer. You need to be careful about what you are concluding. There are limitations of any research you do. There are limitations, and I think you should acknowledge those limitations. Applied research में तो limitations को acknowledge करना बहुत ज़रूरी है. Even theoretical research में, Noor, when we write all these papers and in the discussion we never talk about the limitations of our research. I also don't do that. And there are limitations. For example, mean estimation, this, that. There is an assumption bivariate normality. Bivariate normality है ही नहीं मान लिया तो अब क्या करोगे? So that's the limitation. या उसको explain करें कि how do you get around that? There is a major case that happened. Go back to the previous. This is Space Shuttle Challenger, January 28, 1986. That day, Space Shuttle Challenger went up, exploded, never came back. And the question is, what happened? Who is to blame for that? So let's go to the next slide. So it happened on 28 January 1986. I think some dignitary, probably President Bush, was going to watch that lift off. And the temperature that day was cold.
and the manufacturer had warned that the oil seals, they do not function properly at temperatures below 65 degrees or so, and that day the temperature was 29 degrees. So that the takeoff should not have happened, but it happened because NASA said that, oh yeah, they are doing this, they are doing that, but there's no conclusive evidence. So the space shuttle went up and never came back. And now if you are trying to sue someone for mismanagement, that why did you allow the launch to go forward at 29 degrees Fahrenheit when the recommended temperature is 65? तो पहला तो ये हुआ कि वो जो 65 जो है वो आया कहाँ से, वो उसकी कोई साइंटिफिक वैल्यू नहीं है. But the critical thing in the congressional findings was it's an observational study. It's not an experimental study. जितनी भी स्पेस शटल गई थी, आपने उनका डेटा देखा, and you could see association. Where is the causation? हम लोग देखते हैं यहाँ पे, मैं कॉन्सेप्ट में कल देख रहा था, वहाँ पे बच्चों ने पोस्टर लगाया, बहुत अच्छी बात है, रिसर्च में आते हैं. But when you get into association, be very clear that are you claiming association or are you claiming causation? तो इस केस में उन्होंने कहा कि ठीक है, हम association को मानते हैं, causation को नहीं मानते हैं, क्योंकि it was not an experimental study, it was a observational study. So nobody went to jail, nobody was punished. इतना बड़ा कांड हो गया और किसी को कुछ नहीं हुआ, because that's how they were interpreting this. Anecdotal evidence versus statistical evidence. आप इसको पढ़ते रहें. एक एग्जाम्पल मैंने मेक बिलीव एग्जाम्पल बनाया कि जैसे मान लें कहीं पे there are 40 applicants. To keep the story simple, there are 20 men, 20 women, equally qualified. 4 जॉब हैं. तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कब दिखाई देगा? और जनरली ये डिस्क्रिमिनेशन विमेन के अगेंस्ट ही होते हैं, मेन के अगेंस्ट नहीं होते हैं. तो अगर 2 men and then 2 women are hired, there is no gender discrimination, right? Why would you sue? भाई इक्वली क्वालिफाइड है, 4 वैकेंसी थी, 2 आदमी लग गए, 2 लेडीज लग गई हैं, तो where is the discrimination? लेकिन अगर रेशियो 3:1 बन जाए, is that discrimination now? More men are being hired. What if the ratio become 4:0? 4 वैकेंसी, चारों पे मैन लग गए, कोई वुमन को मौका नहीं मिला. Is that discrimination? तो उसके लिए you try to find the p-value. For example, 2 men and 2 women. What's the p-value? P-value is the probability of seeing 2 or more men being hired if the probability of hiring of a man was 50%. And that p-value is 0.698. अगर कोर्ट में जाते हो तो जज कहेगा shut up. Something like this could have happened 70% of the time. In a story like this, 2 men, 2 women hired, 70% of the time it's going to happen. So you don't have a case, lady. What if 3 men were hired, that p-value is 30%, you go to court, you don't have a case. Because again, the court is going to say, there's a 30% chance something like this could have happened based on random fluctuation. You don't have a case. Look at the last one. If all men are selected, all 4 jobs they went to men, the p-value is 0.053. You go to court. Do you have a case? P-value is 0.53. Remember, the standard threshold is 5%. And the judge is going to say to the woman, bad luck. There is more than 5% chance something like this could have happened. So how can you allege there's a discrimination going on? So in statistics, like for example, the last one, anecdotally speaking, there's discrimination. ऐसा नहीं होता 40 में से वो 4 बंदे लगे हैं और कोई वुमन नहीं लगी. Anecdotally speaking, there's discrimination. Statistically speaking, there is no discrimination going on here. So be clear in your mind as to what's happening. देखिए हमारे पास ये केसेस आते कहाँ से हैं? And they all come through our consulting center. And consulting center, again, success of a consulting center depends on the cooperation of the faculty. And not only cooperation, the knowledge of the faculty. What if the faculty is all very interested in contributing, but they don't know really what statistics is all about? तो वो तो आपको ट्रोल में डाल देंगे.
किसी को कुछ एडवाइस दे दी, किसी को कुछ एडवाइस दे दी, केसेस गड़बड़ हो गए तो then Rasfa is now in trouble. So make sure that not only you get people who are willing to do this work, but they're competent to do this work. So that's important. Off-campus clients जो हैं उनका lot of time they will call you to their office, or they'll come to your office, and then you provide them some guidance. Oftentimes you are asked to prepare a report, and in rare cases you are asked to appear in a court case. And the most challenging part is when you appear in a court case. Next slide. Consulting center, when students come, generally it's a free drop-in service. Anybody can come in there to our consulting center, and they don't have to pay anything. But if a student is working on a thesis, and we know that this student is going to come again and again and again, then we ask the student to sign up for a consulting, 1 credit consulting course credit, so that there's a fee that the university collects, and part of that fee comes back to the consulting center. I think I've talked about this. Off-campus, when you get faculty from other departments, how do you establish your understanding with them? When you're working for a client and you're examining their protocols, so I've highlighted this in Word. मतलब कि United States में Food and Drug Administration is the most powerful, dreaded company. उसके अपने protocols हैं. And protocol is not कि ये कोई अल्लाह की तरफ से नहीं आया है कि ये सर ये लिखा हुआ है, आप इसको वायलेट नहीं कर सकते या इसको चैलेंज नहीं कर सकते. हम जैसे मान लिया कोई गीता को चैलेंज करे या कुरान को, वो तो बहुत बड़ी बात है ना. लेकिन एक गवर्नमेंट ने एक डॉक्यूमेंट बना दिया, why can this not be challenged? So documents can be challenged, and I've done a case where we challenged the Food and Drug Administration, and they had to admit that yes, it was a mistake, but then you need to do it politely. हमारे लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है. इंडिया में, पाकिस्तान में जरा सी कोई बात हो जाए गुस्सा आ जाता है. तो आपको अगर कुछ है कोई ऐसी बात, तो पोलाइटली उसको एक्सप्लेन करें कि ये प्रॉब्लम है, ये ठीक नहीं है. नेक्स्ट वन, कोर्ट रूम में भी अगर आपको जाना है तो एक तो आप झूठ ना बोलें. अब ये बड़ी अजीब सी बात लगती है कि आप कोर्ट में गए और झूठ नहीं बोली. तो वहाँ तो आप ओथ लेते हैं ना कि आई विल टेल द ट्रूथ एंड नथिंग बट द ट्रूथ, सो हेल्प मी गॉड. ये एक ट्रूथ एक ओथ ली जाती है ना. तो उसके ओथ के लेने के बाद फिर वो बहुत सारा झूठ ही चलता है कोर्ट में. अमेरिका में आप जुर्म के अंडर जेल में भले ही ना जाएं, अगर अंडर ओथ आपने झूठ बोल दिया तो आपको जेल होगी ही होगी. आपकी ये नहीं कि फाइन हो जाएगा आपने झूठ बोली है. टू लाई अंडर ओथ, committing perjury, is punishable only by a jail sentence. You have to go to jail. So be careful. आप चुप रह सकते हो. जज ने कुछ पूछा, आप चुप रहें. कि article of the Constitution which allows you a right not to self-incriminate yourself. तो आप कहेंगे कि Your Honor, I would like to keep quiet under article so and so. I refuse to answer this question. लेकिन आप झूठ नहीं बोल सकते. So it's important, don't carry unnecessary stuff with you. मुझे नहीं पता टाइम के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है. Are you keeping time? You are okay. I'm okay. So if you're enjoying the talk, then maybe. We are enjoying. So court में generally क्या होता है कि you have to share your evidence with the other side, and they can ask you to empty your bag right in the court. Professor, can I look into your bag? You cannot say no. You cannot look into my bag. They can look into your bag. और बैग में कोई वाहियात किस्म की चीजें हैं तो make sure you don't keep those things in your bag, because they can actually search your bag. So don't take unnecessary stuff there. Don't speak more than, कुछ लोगों को आदत होती है, मुझे भी है, जरूरत से ज़्यादा बोलने की. My wife always complains कि आपका गला तो खराब रहता है और आप बोलते इतने ज़्यादा हैं. तो लेकिन प्रोफेसर बोलेगा नहीं तो क्या करेगा वो. तो don't speak more than what's really necessary. कोर्ट रूम के अपने एक स्टाइल होता है. अच्छा, हम तो लॉयर्स नहीं हैं,
एक बार मैं किसी का कोई केस था, मैं डिवोर्स का इशू था, तो आई वेंट टू दिस पर्सन टू द अटर्नी। तो मैं जो बातें कर रहा था तो द अटर्नी सेड, आर यू ए लॉयर? आई सेड नो, आई एम नॉट अ लॉयर बट आई वर्क विद लॉयर्स ऑल द टाइम। तो थोड़ी थोड़ी वो लॉयर वाली आदत आ जाती है आदमी के माइंड में ना। तो वन ऑफ द मैनरिज्म्स इज, जज यहाँ बैठा हुआ है, अटर्नी वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, यू लिसन टू द अटर्नी, बिकॉज नहीं उसकी तरफ देखोगे so that's considered very bad. The judge will be offended. You listen to the attorney, and then what I do is I turn my chair and I ignore the attorney and I start talking to the judge. जो मुझे एक्सप्लेन करना है मैं जज को एक्सप्लेन करता हूँ, अटर्नी को एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। दिस इज एडवाइस दैट वाज गिवन टू मी बाय वन ऑफ द अटर्नीज। प्रोफेसर्स को ये चीज़ें नहीं पता होती हैं, लेकिन अगर आप में से कोई कंसल्टिंग करता है और कोर्ट में पहुँच जाए तो ट्राई डूइंग दैट। लेकिन मालूम नहीं कि यहाँ पे दूसरा अटर्नी आपके सिर पे चढ़ जाएगा कि ये क्या, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आप मेरे को इग्नोर कर रहे हो। अटर्नी करेगा, अलाउ नहीं होता डायरेक्ट बात। क्या चीज़ है ये? अटर्नी के थ्रू वो बात कर सकते हैं, डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं कोर्ट में। जज से बात नहीं कर सकते जब तक वो अलाउ ना करे, पहले वो ना करे। आपको नहीं, आप बात नहीं कर रहे हैं, आप जज को देखिए। अटर्नी को कहेंगे, सारा वो पड़ेगा। हाँ, वहाँ पे एक ऑफिशियल मैंडेट आपके क्या है कि यू हैव टू एजुकेट द जज एंड द ज्यूरी, यू डोंट हैव टू एजुकेट द अटर्नी। तो इस अटर्नी ने मुझे बताया कि एक तो इसको गुस्सा आएगा, आप गुस्से में आदमी गलत काम करता है, फिर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, एंड यू आर क्रिएटिंग योर कनेक्शन विद द जज। अब ठीक है, ये चीज़ वहाँ पे वर्क कर रही है जहाँ जैसे भी बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे ये चीज़ ठीक नहीं मानी जाएगी, तो आप ना करें इसे। डायरेक्ट बात नहीं होती, थ्रू अटर्नी। आप बात नहीं कर रहे हैं, आप उसको अपना समझा रहे हैं कि हाँ ये चीज़ है। और अटॉर्नी सवाल किया उससे आदमी से, अब वो उसको जाके जज को बताया कि ये इनका गलत कहा है, तो वो थोड़ा सा यहाँ चेंज है। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं कि समथिंग कॉल्ड ओपनिंग द डोर फॉर यू, एक प्री ट्रायल डिस्कवरी होती है। तो वट एवर एविडेंस यू हैव टू शेयर इट विद द अदर साइड, और आपने शेयर की नहीं और कोर्ट में अचानक आप पहुंच गए। फिल्मों में देखते हो ना कि लास्ट मिनट पे बिल्कुल कोर्ट में केस चल रहा है, एक बंदा दौड़ा हुआ आता है, योर ऑनर मुझे अभी ऐसी एक क्या कहते हैं वो मिली है एविडेंस, उससे पूरे केस का रुख बदल जाएगा। तो फिल्मों में तो ठीक है, यहाँ की कोर्ट्स में भी होगा, अमेरिका में कहेंगे जस्ट कीप क्वाइट। आपने ये जो आपको इतनी बड़ी जो कुछ मिला, आपने दूसरे के साथ शेयर किया है अटर्नी के साथ? सर नहीं किया। देन जस्ट कीप सिटिंग, पहले उसके साथ शेयर करो, उसके बाद बात करना। लेकिन स्पॉन्टेनियस एविडेंस, नई एविडेंस कब इंट्रोड्यूस हो सकती है? व्हेन द अदर साइड ओपन द डोर फॉर यू। जैसे हम लोग एक केस कर रहे थे, हमें मालूम था कि ये हमने टी टेस्ट लगाया उस पर, एंड वी न्यू दैट द अदर प्रोफेसर इज गोइंग टू कंप्लेन कि सर यहाँ पे तो टी टेस्ट लग ही नहीं सकता, या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगना चाहिए। जैसे नॉन पैरामेट्रिक से भी हमारा रिजल्ट वही आता था। तो व्हाट आई डिड वाज आई रोट अ रिपोर्ट, उसमें मैंने सिर्फ टी टेस्ट इंट्रोड्यूस किया, एंड एज वी सस्पेक्टेड the other side started complaining that no, yeah, t-test is not applicable here, they should have done non-parametric. वो non-parametric की बात उन्होंने की है पहले, हमने नहीं की थी। So they opened the door for us. And then my attorney said that, Professor Gupta, what is this non-parametric? It's all drama. We knew that this is going to happen. And then I started explaining. And then he said, by the way, did you do it through non-parametrics? I said, yes, I did. And I get the same result. Then why didn't you introduce it, include it in your report? Because a parametric test is more powerful than non-parametric test. And that's why I didn't want to get into this, but I had done it. And that's where they lost the case, because उनकी खुद की जो argument है, उसके according भी वो case को lose कर रहे हैं. Let's go on. Some specific examples हैं, जैसे I think I had planned on showing you 3 examples. One was, and I may not show you any one of them because I think time-wise there is a problem here. I don't want to impose on somebody else's time. But there was one example that I had included where we went up against Food and Drug Administration. कोई court case नहीं था. But we tried to challenge them कि आपका जो protocol है वो ठीक नहीं है. This needs to be fixed.
and we ultimately made them accept our point of view. And you don't need to change any more slides. I'm just verbally talking about like one case in this, and Noor, you can share these slides with people so that they can read what the other cases are. One case was where there was a court case involved, age discrimination court case. Somebody was fired, and we successfully argued कि ये जो बंदे को तुमने निकाला है ये इसमें एज का रोल रहा है. A very simple thing was, मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाया. So all of the employees, they were either fired or they were not fired. Binary response, yes or no. And I used age as a predictor. और अगर एज का कोई रोल ही नहीं है तो एज p value should be high. And our p value for age was low. And so it shows that age was playing a role. और थर्ड केस वो ये जो होम हेल्थ एजेंसी के मैंने बताया था कि the judge at the last minute said that why should I prove your calculation, Professor Gupta? Because you did not find the overpayment calculation for all the cases, you found only for 100. Why should I trust you? And so you need to be careful about those kinds of things, that people can ask you those kinds of questions, and you need to be aware of those. I think I'll wrap it up at this point. And I don't know if time permits any questions, comments, you can ask, and if not. If you have questions, Yes, please. sir. Correct solution to the wrong problem, type 3 आपने बताया सर. तो ये solution तो correct है, problem के साथ क्या problem है ये मुझे समझ नहीं आया. अब वो डॉक्टर के पास आप जाते हैं, आपको डिजीज ए है, ए कुछ भी हो सकती है, डॉक्टर समझता है आपको डिजीज बी है, तो बी डिजीज का सही इलाज कर रहा है, वो उसकी दवाई ठीक दी है उसने बिकॉज डिजीज बी, लेकिन डिजीज बी तो आपको है ही नहीं, आपकी डिजीज तो ए है जो उसने डायग्नोज ही नहीं की. ऐसे ही जब स्टेटिस्टिकल कंसल्टेंट के पास कोई आता है, उसकी प्रॉब्लम कुछ और होती है और आप कुछ और समझ गए, आप उस प्रॉब्लम की उसको एडवाइस देने लग गए, जो सही बात है वो तो आपने बताई नहीं है. Is that called type 3 error? That's called type 3 error. Type 3 error. Correct solution to the wrong problem. Confidence interval की बात करें, two sided, तो interval तो ये होता है कि एक lower limit होता है, एक upper limit होता है. अभी जो one sided है वो तो interval ही नहीं बना. Upper limit और lower limit ये हो सकता नहीं, वो यही गड़बड़ है एक्चुअली. हम लोग ना वो जो सही चीज़ पढ़ाने वो नहीं पढ़ाते हैं. तो जैसे इंटरवल तो फिर भी बना, उसकी लोअर लिमिट मान लिया ए है, अपर लिमिट इन्फिनिटी है, तो अभी भी इंटरवल है वो ए थ्रू इन्फिनिटी. लेकिन वहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ए क्लेम वहाँ पे होना है. अगर टू साइडेड इंटरवल की लोअर लिमिट निकाले या वन साइडेड की लोअर लिमिट निकाले, तो वन साइडेड की लोअर लिमिट थोड़ी ज़्यादा होगी टू साइडेड वाली से. तो आप चांस ना लें कि आप टू साइडेड लिमिट निकाल के दिखाएं, तो आप पहली बात तो आप यू विल लुक डम. कि आपको पता होना चाहिए था कि इस तरह के केसेस में यू नीड टू फाइल द केस एट द लोअर एंड पॉइंट, नॉट एट द सेंटर, एंड नॉट बेस्ड ऑन ए टू साइडेड इंटरवल. सर. और ये p value है आपके पास सर, अगर 30 आ जाए और p value 0.04% significant है HD की 30 है, तो आप इसको प्रूव करते हैं कि बस ठीक है ये significant है, p is equal to 0.0495% है. P value का जनरल एक थ्रेशोल्ड है 0.05. It's considered based on legal cases, many court cases, 0.5 that will be accept statistical significance. लेकिन हमारा 0.6 है. हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं साइकोलॉजी से, इधर से उधर से, उनकी P value आ गई 0.08. सर मेरा सारा प्रोग्राम ही खराब हो गया, मैंने इतना एक्सपेरिमेंट किया, डेटा कलेक्ट किया, हमारी P value 0.8. अब मैं क्या करूँ, मेरी चीज़ से क्या होगा? तो हम उनको कहते हैं कि up to 10% you can say that there is weak evidence, there is weak evidence of score for your research. 10% के beyond चीज़ें जाते फिर तो आप आर्ग्यू ना